Let's go on to the next part, guys. We talk about the highest power of factorials, okay? And now in that case, we'll talk about the number of zeros in factorials, okay? So a question let them find the number of zeros in 50 factorial, okay? So a bada number ho gaya 50 factorial, okay? So we'll make observations from small factorials and check ki what exactly governs the number of zeros in factorials, right? So let's talk about 4 factorial. 4 factorial 24 hota hai, guys. इसमें एक भी zero नहीं आता. 24 to 10 power 0. Let's talk about 5 factorial. 5 factorial is 120. 120 is 12 into 10 raised to 1. एक zero आता है. 10 factorial is 3628800. Okay, it contains two zeros. Okay, so it's 36288 into 10 square. 15 factorial की वैल्यू मैंने दी स्क्रीन पे exactly यही है guys. It consists of 3 zeros, right? In the end we have 10 raised to 3. ओके अब यहां से हम बेसिकली गाइस क्या ऑब्जर्व करते हैं ओके जितना भी जीरो बनता है फैक्टोरियल में ओके ये जीरो बेसिकली कहां से आता है दिस जीरो इज द पावर ऑफ 10 in fact the highest power of 10 which you have in the factorial right okay so always remember guys number of zeros okay in the factorial is nothing but the highest power of 10 okay ये भी हम क्यों लेते हैं guys okay because we have the decimal system of counting right okay we have digits from 0 to 9 okay 9 का अगला नंबर बेसिकली क्या होता है 10 होता है ओके सो अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस इन 50 फैक्टोरियल फाइंड करना है यहाँ पे वी आर डूइंग इट इन बेस 10 और डेसिमल सिस्टम जो अपना यूजुअल काउंटिंग सिस्टम है ओके सो वही बात है अब 10 तो कंपोजिट नंबर है 10 की जो वैल्यू है वो 10 से नहीं मिलेगी अपने को यू हैव टू कंबाइन पावर्स ऑफ 2 and 5 इन दिस केस राइट सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 50 फैक्टोरियल में 47 एंड वी सपोज टू फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन 50 फैक्टोरियल ओके जो हो जाएगा मेरे ख्याल से 11 ओके सॉरी 12 ओके 10 + 2 हो जाएगा माय बैड ओके सो गाइस 5 की सिर्फ 12 पावर्स अवेलेबल है और 2 की 47 पावर्स अवेलेबल है तो 10 कितना बनेगा ओके सिर्फ 12 पावर्स ऑफ 5 आर अवेलेबल राइट दिस 12 विल कंबाइन विद दिस 12 और पावर्स ऑफ 2 टू फॉर्म बेसिकली पावर्स ऑफ 10 राइट सो 10 की कितनी पावर अवेलेबल होगी ओनली 12 राइट यहां से हम एक चीज सीखते हैं गाइस नंबर ऑफ जीरोस ओके इन द डेसिमल सिस्टम व्हिच वी हैव बेस 10 okay it won't be equal to the highest power of 10 it will be directly equal to the highest power of 5 okay because guys अगर ऑब्जर्व कीजिए if you want to find out let's say the highest power of 10 और number of zeros in n factorial okay n factorial को पहले आप क्या करेंगे पहले आप इसको basically 2 से डिवाइड करेंगे सक्सेसिवली okay to find out the highest power of 2 and इसी n को फिर आप 5 से भी डिवाइड करेंगे सक्सेसिवली राइट okay understand guys since 5 is a greater divisor okay 5 की जो पावर्स यहाँ पे आएंगी वो डेफिनेटली छोटी होगी 2 से राइट okay so directly for finding out the number of zeros okay in n factorial in our base 10 decimal system always find out the highest power of 5 directly इस पे क्वेश्चन करते हैं फटाफट find the number of zeros in 1001 factorial you directly know what is to be done shoot please try it out all right so 1001 we successfully divide this with 5 so ये हो जाएगा 5 200s are 5 40s are 5 8s are 5 1s are add all these values okay the highest power is 249 so the number of zeros is nothing but the highest power of 5 which is the same as the highest power of 10 249 so 1001 factorial will consist of 249 zeros my god next time I'll write a check I'll write 1001 factorial okay guys so let's go on to the next part now क्या करेंगे पहले गाइस हम लोग ओके फॉर फाइंडिंग आउट द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन n फैक्टोरियल पहले हम इस n को लिखते हैं एज 5a + b जिसमें a इज मैक्सिमम पॉसिबल ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 13 फैक्टोरियल है तो आप बोल सकते हो कि 5 into 8 सॉरी 5 into 1 + 8 भी एक तरीका है इसको लिखने का ओके बट इन दैट केस a वोंट बी मैक्सिमम राइट मैक्सिमम a कब होगा जब हम इसको लिखेंगे 5 into 2 + 3 राइट so writing this is 5 into 2 + 3 okay what we next need to do is we need to write the last non-zero digit as 2 raised to a into a factorial into b factorial ये मैं करके दिखाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा exactly so 13 guys will write it as 5 into 2 + 3 in this case right and here a का वैल्यू हमको 2 निकल गया और b का वैल्यू हमको 3 निकल गया right so just find the value of 2 raised to a 2 raised to 2 into a factorial 2 factorial into b factorial 3 factorial okay so calculating the product of these three values okay we get 4 into 2 into 6 okay 8 6 are 48 so the last non-zero digit of the factorial is 8 as simple as that okay